Hello and good evening, everyone. My name is Deependra, and I welcome you all on the behalf of Creative Edge. Well, in this prep talk, we'll talk about aptitude and mathematics. Well, not only just aptitude and mathematics, basically the techniques which will help you in scoring well in these design entrance exams and architecture entrance exams, in which aptitude and mathematics is asked. So again, I welcome you all. I hope most of the students must have joined in. So let's straight away get started with the agenda for the day. Rather, before we start, I would like you to, or I would want you all to solve or give it this puzzle a try. So before we start this session, let's understand a puzzle and let's solve it together. So all these students, get ready. Uh, Imagine that this is a piece of cardboard, the structure which is shown to you in front of you. And this piece of cardboard has been divided into four equal parts. I hope you can see this first part, then the second part, then the third part, and the fourth part. Well, out of this piece of cardboard, from between, if you could see these three smaller blocks, these three smaller blocks have been taken out from this piece of cardboard. And then if I talk about this first segment, which on the screen should be visible on the top left corner, or rather the top right corner for you. So on the top right of it, this first segment, I want you all to divide into two equal parts. I hope you must have heard the question pretty well. The top right segment, the L shape, which you are seeing on the top right part of this sheet or this screen, that I want you to divide into two equal parts. Well, you can write your answers in the comment box. I would be eagerly be waiting for your answers. It's good to have you all. Try and answer this question, all the participants, as soon as you get the answer. Well, let's quickly discuss its solution as well. I hope most of you must have cracked it by joining these two corners or vertices diagonally. So I believe this must have been your answer. So this is how you must have divided this first segment into two equal parts. Well, when I ask you to divide it into two equal parts, my major concern is that these two parts should be congruent. Well, congruency means they should be similar in terms of shape and the size. So the area should also be same. Well, if I extend this question further or if this puzzle further, could you divide this second part? I hope just next to it, there is another second part you must be seeing. Could you divide this second part into three equal parts? Well, give it a try and I would be expecting answers in the chat box. So all these students, try and divide the second part. That's really good, Mahima. I'm glad you answered. Now try and divide the second part, everyone, all the participants. Okay, so I hope most of you must have again cracked it that if you create a square there, this is how this shape, this L shape again gets divided into three equal parts, right? Well, let's make the problem a little tougher. I would ask you or I would want you to divide the third segment into four equal parts. Now, this is a little tricky one. If some of you are thinking of creating, four triangles, well, that is unfortunately not a correct answer because two of those smaller triangles will be smaller in size and shape, and the rest of the two triangles will be bigger in shape and size. Well, that is not going to be the answer. So you need to think of something else. So give it a try, all the participants. The question is divide this third segment into four equal parts. And I am again waiting for your responses in the chat box. That's really good, Rahel. That's really good, everyone. So I'm really glad that most of you are so constantly responding. That's really good. That's good again, Mahima and Rahel, both of you. That's excellent. So again, if we were discuss the solution to this question, the solution is quite simple, although a little tricky this is. You need to draw the same shape, the shape originally which you were supposed to divide into four equal parts. That same shape will get repeated four times, and this is how you achieve or you divide this segment into four equal parts. Let's make the problem a little more challenging, a little more complicated. So the level of intricacy we are increasing with this fourth question for the day. Try and divide this fourth part into five equal parts. Now think of doing something. And as soon as you get the answer, kindly write your answers in the chat box. Most of you, I'm very sure, must be thinking of doing something like, creating some squares or, dividing it diagonally
or thinking a lot of more, complex ways. What I would recommend you to do is, the solution is quite simple. You need not think much. You need not use a lot of brain in this question. The solution would be this, that by, creating either four horizontal lines or four vertical lines, you can divide this fourth segment into five equal parts. The motive behind keeping this question was quite simple. I just wanted to make you realize that this is what competitive exams do. What they generally do is, the questions are obviously a mixture of easy, tough, and moderate level of questions. And they make you think in a certain way. For even simpler or easier problem, they make you think in a certain way. And what they do to your brain is this, that even simpler problem you approach with that difficult or integrate mindset. And that's what, causes a lot of trouble in these competitive exams. So the first learning for the day would be quite simple. Believe me, it is not your ability to solve all the questions which is being assessed in these competitive exams. To be honest, or in reality, it is your ability to select a certain set or category of questions which will help you in getting a good optimum score in these competitive exams. In simple language, all I'm trying to make you understand is, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस सेलेक्ट करके उन्हें सही करके आते हैं. वेल, आपको चुनने होंगे क्वेश्चंस. द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैटर द मोस्ट हियर. आई रिपीट, आपको आसान क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस चुनने होंगे, उन्हें सॉल्व करना होगा और उन्हें सेलेक्ट करके एग्जाम में बस सॉल्व करके आना होगा. दैट विल डिसाइड योर फेट इन दिस और दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Believe me, you need not solve all the exams or all the questions in these exams. I hope you must have understood or grasped the first learning for the day. Well, with that, let's move towards few more things. So this is what I was talking about. Don't fall into the trap which they are designing for you. You need to choose your enemy well. जब सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर सेम मार्क्स मिलेंगे, तो यू नो टफ एनिमी से लड़ने का क्या फ़ायदा. मतलब टफ एनिमी से लड़ना और उतने ही मार्क्स अचीव करना जितने आप इजी और सिंपल या वीक एनिमीज को हरा के अचीव कर सकते हो. So it's advised, it's quite intelligent to solve those easy and moderate level questions instead of going for those hard and tricky questions. So that is the first learning for the day. Please remember that. Well, I'm always, a believer of studying the exam before studying for the exam, which means, you need to understand your enemy well. Whenever you're going for a battle, you need to invest a lot of time in understanding the exam. By understanding the exam, it simply means you need to understand the pattern, you need to understand the syllabus, you need to understand a lot of details about that exam. And once you have gotten a lot of clarity regarding the exam, you would be very easily able to solve most of the questions. So again, you can optimize your score if you understand your exam better. So when it comes to NID, aptitude part is 30% and drawing part is 70%. So yes, I am not denying the importance of drawing. Drawing is again going to be the crucial part or the vital role which is going to be played by drawing and design in these design entrance exams. So whether it is NID, NIFT or UCEED, for all these three design entrance exams, the major part is going to be drawing. So you need to practice and prepare a lot as far as drawing and design is considered. But yes, when it comes to aptitude, once you have gotten a good score in drawing part, the rank, your selection, your cutoff will get decided with the help of how well are you scoring in the aptitude section. So yes, you need to score well in the aptitude part as well. So in NID, the percentage, however, keeps varying, but it sticks around 30% and 70%. So 30% is aptitude, 70% is drawing. Well, as far as aptitude for NID is considered, it is more of picture-based aptitude. Well, at Creative Edge, we call it non-verbal reasoning. So most of image-based questions are asked in aptitude segment in the NID examination. Well, aptitude is not just a combination of non-verbal reasoning, but questions from GK, current affairs, and English are also asked in this NID entrance exam. So be careful, you need to study a lot of things. Coming to NIFT or talking about NIFT, well, the weightage in the examination, the syllabus or the question papers weightage is 50% for drawing reserved and reserved 50% for aptitude. However,
While considering your score, while evaluating your candidature, this weightage gets varied. आप समझिएगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चंस डेफिनेटली एप्टीट्यूड के होंगे, 50 क्वेश्चंस ड्राइंग के होंगे। बट जब आपका स्कोर कैलकुलेट होगा तो जो भी आपने एप्टीट्यूड में स्कोर किया है उसका 30% वेटेज होल्ड करेगा आपका ओवरऑल परसेंटाइल, और 70% वेटेज आपका डिसाइड करेगा ड्राइंग का स्कोर। सो जो भी आपने ड्राइंग सेगमेंट में स्कोर किया है उसका 70%, और जो भी आपने एप्टीट्यूड में स्कोर किया है उसका 30% वेटेज विल बी कंसिडर्ड while evaluating your final score for considering your rankings and cutoff. I hope that is clearly understood by all the participants. Talking about again aptitude as far as NIFT examination is considered, निफ्ट में एनआईडी से काफ़ी अलग लेवल पर एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो निफ्ट में जो एप्टीट्यूड होगा, दैट एप्टीट्यूड इज गोइंग टू बी मेजरली फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वर्बल रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब रेशियोज, प्रपोर्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड, एवरेजेस, time in work, such topics or such questions will be asked. Well, direction sense, blood relations, some topics from verbal reasoning are also asked in this NIFT examination. Along with that, yes, you need to study a lot of GK, current affairs related to your domain, related to design, and English. Yes, in NIFT, English plays a crucial role. English holds the equal importance in NIFT examination. So please be careful, study or read a lot of English. Well, that is really going to help you a lot in clearing or clarifying NIFT entrance exam. Coming to UCEED, UCEED is a completely different ball game. You need to understand UCEED is completely a technical exam. Well, yes, UCEED indeed asks you a lot of design and drawing related questions, but UCEED is basically conducted by IITs, and they ensure that the level of questions is really high. So they basically, first of all, what they assess is your problem solving attitude, your ability to deal with a lot of logical problems. That how do you see or perceive problems, and how do you respond to them, and how do you finally get the answer? So your ability to solve a lot of puzzles, a lot of brain involved, where a lot of brain or mind is involved, such puzzles are asked in UCEED examination. Although those logical questions are combination of drawing and design related questions. So your logical brain and your creative brain in a combined manner is being assessed by UCEED. So UCEED again has questions from drawing. CEED has a lot of questions on drawing. Basically, UCEED has only one question from drawing, but again, that has its own weightage in this UCEED examination. So again, drawing and design principles are asked in UCEED examination as well. If I talk about the crux or the gist for UCEED examination, your skills, your observation, your visualization, and your imagination skills. Basically, these skills are assessed by UCEED. So a lot of analytical and logical reasoning skills, that how critically you can, visualize things, how closely, how कितनी बारीकी से आप चीज़ों को इमेजिन या विजुलाइज कर पाते हैं, कितना क्लोजली आप चीज़ों को देख पाते हैं, वो चेक या एसेस किया जाता है यूसीईडी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस के द्वारा. And again, design and drawing principles are again asked in this UCEED examination, so you should be watchful of those questions as well. Talking about architecture entrance exams, architecture के लिए दो entrance exams होती हैं, NATA and JEE paper 2. NATA is again an exam which is very dynamic exam in nature, जो constantly अपना pattern change कर रही है. But अगर मैं बहुत holistically और comprehensively बात करूँ तो NATA is a combination of all the exams basically. तो NATA UCEED से questions fetch कर रहा है, NATA निफ्ट के एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस फैच कर रहा है, नाटा मतलब नाटा सब कुछ पूछ रहा है, नाटा इज आस्किंग यू एवरीथिंग. नाटा आपका बहुत होलिस्टिक ब्रेन चेक कर रहा है. सो इट हैज़ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स, इट हैज़ क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें इमेजिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं. तो अगेन एप्टीट्यूड जैसा आप निफ्ट में पढ़ते हैं वैसा एप्टीट्यूड क्वांट, वर्बल रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इवन आर्किटेक्चरल अवेयरनेस एक नया सेगमेंट ऐड हो जाता है, क्योंकि अब आपकी आर्किटेक्चर को रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स और आपकी नॉलेज चेक की जाती है. एंड ऑब्वियसली इंग्लिश के पैसेजेस पूछे जाते हैं. सो नाटा इज अगेन एन एग्जाम जो हर एग्जाम का कॉम्बिनेशन है. सो येस, एट क्रिएटिव एज वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हम इंश्योर करें कि आपको नाटा के लिए वो स्पेसिफिक वो नाटा ओरिएंटेड तैयारी भी करवाई जाए. Talking about JEE paper 2, JEE paper 2 is again, they are still the old school people, they are still conducting their exam in their own manner. So JEE paper 2, first of all, mathematics 11th and 12th standard वाला,
जो आप पढ़ा करते थे, जो आप जेई लेवल की तैयारी करते हैं तो वो जेई लेवल का ही 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स वो पूछते हैं. Along with that, aptitude, 50 questions on aptitude, 35 pure aptitude, non-verbal reasoning based, जहाँ पर mirror image, water image, paper folding, paper cutting, counting the number of surfaces, plan and elevation related questions. So ऐसे questions are asked in aptitude. Well, 35 के अलावा 15 questions GK के भी होंगे. Well, GK means again architecture से related GK. अपार्ट फ्रॉम दैट येस, ड्राइंग क्वेश्चंस जैसे आपके यूसीड में एक या दो क्वेश्चंस ड्राइंग के आते हैं, सिमिलरली आपके जे पेपर 2 में भी ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं. सो दैट्स गुड. Continuing further, if you have any queries or concerns, you feel free to write your queries in the chat box. I'm constantly checking the chat box. So whenever you have any queries, feel free to ask. Okay, apart from that, this is one of the learnings which I have learned from one of my teachers. Dr. Sandeep Atre is the person from whom I have heard this line that practice does not make a man perfect. Please understand, practice makes things permanent. In order to become right, in order to become correct, in order to have the right practices, and in order to develop the right techniques, you need to have the right practice. I repeat, only right practice can make you perfect. So it's important that you learn the right techniques, you have the right approaches. Obviously, यहाँ ये मैटर नहीं करता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मतलब ही यही है कि आप उन क्वेश्चंस को सही टेक्निक्स की हेल्प से कम तयशुदा वक्त में सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. सो दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर इन दीज एग्जामिनेशंस. सो बिवेयर ऑफ दैट. आई रिपीट, प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट. सो बाय प्रैक्टिसिंग ओनली आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे. यू डोंट नॉट एवरी वन कैन बी द एकलव्य. मतलब हम सब एकलव्य नहीं है. हमें मतलब मोस्ट ऑफ अस आर अर्जुन जिन्हें द्रोणाचार्य की ज़रूरत होती है. दैट इज़ व्हाट वी इंश्योर कि आपकी हर एग्जाम स्पेसिफिक, बिकॉज वी हैव स्टडीड द पैटर्न, वी हैव स्टडीड द एग्जाम्स, वी हैव गॉन थ्रू दीज मेनी ईयर्स रिसर्चिंग ऑल अबाउट दीज एग्जामिनेशंस. वी नो दीज एग्जाम्स इन डिटेल एंड वी नो कहाँ पर किस एग्जाम में किस तरह के कैसे सवाल पूछे जाते हैं और उनकी कैसी स्पेसिफिक तैयारी करनी होती है. एंड वी इंश्योर कि उस एप्टीट्यूड या मैथ को कैसे बारीकी में तैयार किया जाता है. आने वाली स्लाइड्स में हम बुक्स की भी बातें करेंगे, बट अगेन मसला यही है दैट व्हेन यू टॉक अबाउट बुक्स, उन बुक्स में पूरा मतलब एग्जैक्टली बहुत स्पेसिफिक नहीं दिया. दे आर वेरी जनरल बुक, वेरी वेग बुक्स, जहाँ पे आपको हर टॉपिक की डिटेल्स दी गई हैं. अब ये आपको करना होगा कि आप वहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट या फैच करें. एंड दैट इज़ वेयर डिज़ाइन आइफा और क्रिएटिव एज कम्स इनटू पिक्चर कि आपकी एग्जाम स्पेसिफिक तैयारी करवाई जाए. वेल, इफ़ आई टॉक अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर ईच ऑफ द एग्जामिनेशंस, हम यूसीड की बात करें जैसा हमने डिटेल में डिस्कस किया. स्टडी अ लॉट ऑफ ड्राइंग, डू अ लॉट ऑफ ड्राइंग, डू अ लॉट ऑफ करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग. करेक्ट प्रैक्टिस, आई होप यू आर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द करेक्ट प्रैक्टिस, द राइट प्रैक्टिस. राइट, आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस परमानेंट बन जाएगी. अगर आपने गलत चीज़ें प्रैक्टिस की हैं तो आप गलत चीज़ों को परमानेंटली अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में इस्टेब्लिश कर लेंगे. सो यू नीड टू डू द राइट प्रैक्टिस. ऑब्वियसली डिज़ाइन के काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स यूसीड में पूछे जाते हैं. Along with that, as we have already discussed, analytical, logical, visualization, imagination skills are asked. जब आप UCEED के पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे ना, आपको काफ़ी डिटेल में नॉलेज होगा कि UCEED इज़ बेसिकली किस तरह का एग्जाम है और किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है. वेल, दीज आर द बुक्स विच आई वुड रिकमेंड फॉर यूसीड, बट अगेन आई वुड नॉट से कि यही वो बुक्स हैं जिनसे यूसीड की तैयारी की जा सकती है या इन्हीं से बस काफ़ी रहेगा. बट येस, दीज बुक्स विल अगेन गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट्स. वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स इज दिस Math Puzzles Volume 1 by Presh Dalwalkar. He has given or brought some really a good collection of puzzles, brain teasers and a lot of game theory based questions जो UCEED अक्सर पूछता है. Well, not only that, but UCEED ज्योमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछता है जहाँ पे आपका ड्राइंग का नॉलेज टेक्निकली चेक किया जाता है. सो ये ब्रेन टीजर्स, 536 पजल्स एंड ये सारी बुक्स काफ़ी क्रूशियल हैं अगर आप यूसीड की तैयारी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन इट कम्स टू एनआईडी, आई रिपीट, एनआईडी में प्योर एप्टीट्यूड क्वांट या वर्बल नहीं पूछा जाता है. एनआईडी का मेजर स्पेसिफिक पोर्शन जो टारगेटेड होता है वो नॉन वर्बल इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पर होता है. वेल यस, थोड़ा सा वर्बल या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, बट वो आप अपनी इंटेलिजेंस से भी सॉल्व या अटेम्प्ट कर सकते हैं. बट येस, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एनआईडी में अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल आते हैं. तो आप प्लीज़ स्टे इन टच विद योर डोमेन. तो जिस भी डोमेन में आप हैं डिज़ाइन रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ते रहिए. ओके, अगेन फॉर एनआईडी इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनके लिए आई कैन रिकमेंड यू एनी बुक. आप इंटरनेट पर भी काफ़ी सारे सवाल ढूंढ सकते हैं उससे रिलेटेड, बट दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स विच यू कैन प्रेफर. Although at Creative Edge we have specific material designed for these exams which you can always practice.
फॉर एनी क्वेरीज आप डिज़ाइन आईफा या क्रिएटिव एज की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इन एग्ज़ाम या सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज के लिए इंक्वायर कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट निफ्ट हमने शुरू में डिस्कस किया अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज कम, बट इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन जितना एप्टीट्यूड उतना इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, बेसिकली बहुत सारे पैसेजेस और उन पैसेजेस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड डेफिनेटली अगेन फैशन से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्ट। निफ्ट के लिए अगेन ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव बुक्स हैं जो मैं नहीं कहूँगा कि आप सॉल्व करें, मतलब मैं कहूँगा कि आप नहीं सॉल्व करें, बट हाँ इन बुक्स में जो टेक्निक्स दी गई हैं उन टेक्निक से आप डेफिनेटली बहुत सारी इंसाइट्स अचीव कर सकते हैं कि उन क्वेश्चंस को कम वक्त में कैसे सॉल्व करें। तो ये पूरी बुक प्लीज़ मत ट्राई करिएगा। इन बुक्स में जो टेक्निक्स बताई गई हैं, जो ट्रिक्स और टिप्स बताए गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, वो ज़रूर आप इन बुक्स से इम्बाइब कर सकते हैं। बट अगेन यू नीड टू स्टिक कि निफ्ट का एग्जैक्ट पैटर्न सिलेबस क्या है और आप वही चीज़ें इन बुक से प्रैक्टिस करें। इन पूरी बुक्स को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। Continuing further, when it comes to NATA, NATA is again design, aptitude, logical, observation. I mean, NATA asks you everything. What not they don't ask. They ask you everything. So basically आप जिन सारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, आप सबकी तैयारी कर लीजिए, आपकी नाटा की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सो नाटा के लिए येस आई क्यू, न्यूमेरिकल, पजल बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशल एप्टीट्यूड स्किल्स, ये सब पूछी जाती हैं एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, साइकोमेट्री से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। सो दीज आर द जनरल स्टैंडर्ड बुक्स विच आई वुड रिकमेंड। एक तक्षशिला एडिशन है जहाँ से आप ज्योमेट्री की तैयारी कर सकते हैं। तो नाटा ऑब्वियसली आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो ज्योमेट्री से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछता है। तो ज्योमेट्री की इंसाइट्स, बारीकियाँ, न्यूएंसेस आपको इस बुक से बहुत डिटेल में मिल सकती हैं। I generally prefer these books, while conducting my classes, but although I extract the crucial information जो एग्जाम के लिए needed है, crucial है, हम वही रेफर करते हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। वेल नाटा में पजल्स और रिडल्स भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ सॉल्विंग रिडल्स, सो अगर आपको बहुत रिडल्स या काफ़ी सारे रिडल्स प्रैक्टिस करने हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स विच आई वुड recommend you to practice. Apart from that, JEE पेपर टू इज़ अगेन अ लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, और ये JEE लेवल का मैथ्स है जो बीटेक के लिए पेपर 1 में पूछा जाता है, वही पेपर 2 में मैथ्स पूछा जाता है। 30 क्वेश्चंस होते हैं, अभी पैंडेमिक में 30 क्वेश्चंस होने लगे हैं। 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल, तो बेसिकली आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन जनरल पहले 25 क्वेश्चंस ही आया करते थे, तो मैथ्स में अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट येस ड्राइंग, स्केच बनाना होता है, 2 या 4 क्वेश्चंस आते हैं, और में तो बेसिकली वो 2 क्वेश्चंस होते हैं, बट आपके पास चॉइसेस 4 क्वेश्चंस की होती है। एंड येस JEE पेपर 2 में एप्टीट्यूड के नाम पर दे आस्क यू नॉन वर्बल रीजनिंग, तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, जैसा हमने डिस्कस किया, प्लान, एलिवेशन, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, काउंटिंग ऑफ सरफेसेस, इस तरह के नॉन वर्बल रिलेटेड क्वेश्चंस एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। Well, I hope I have given you a lot of clarity on all these examinations. Finally, JEE पेपर 2 के लिए बुक्स जो मैं recommend करूँगा, आप कोई भी एडिशन ले लीजिए, पियर्सन का ले लीजिए या टाटा मैग्रा-हिल की बुक, इससे आप मैथ्स बहुत अच्छे JEE लेवल का प्रैक्टिस कर सकते हैं। JEE मेंस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स आपका आराम से क्लियर होगा। वेल कमिंग और टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड, वेल ये अरिहंत का एक बुक होता है B.Arch, जो कि वो बोलता है कि सेल्फ स्टडी गाइड है, बट इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टडी गाइड। आप इस बुक से डेफिनेटली एप्टीट्यूड ज़रूर पढ़ सकते हैं, बट मैथ्स के लिए आई वुडेंट रिकमेंड यू दिस बुक। सो एप्टीट्यूड अगर आपको प्रैक्टिस करना है या आर्किटेक्चरल अवेयरनेस की थोड़ी बहुत रिविजन करना है, तो आप येस इस बुक को रेफर करें, बट डिटेल में पढ़ने के लिए अगेन आई वुड से यू नीड द राइट ट्रेनर, यू नीड द राइट गाइडेंस, यू नीड द राइट ट्रेनिंग, बिलीव मी, you need the right trainer to do the right practice basically, right? With that, I am done with my information or my knowledge. I think I have conveyed most of the things, but I am very sure कि कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो आपको जो भी queries या concerns हैं, feel free to write them in the chat box. I would love to answer them. Tyson is asking what is Design IFA? Well, Tyson, Creative Edge is the online venture of Design IFA. So Creative Edge का offline center is known as Design IFA. हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है Design IFA, जिसका online vertical is known as Creative Edge. So Creative Edge and Design IFA both are same. Uh, Parvani Sharma is asking, sir, can you elaborate the part of current affairs questions for NIT? परवनी, करंट अफेयर्स यानी डिज़ाइन रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, डिज़ाइन से रिलेटेड आपका जनरल अवेयरनेस चेक किया जाएगा। फॉर मोर डिटेल्स, येस यू हैव हियर मोर फैकल्टी मेंबर्स with which you can get in touch and you can get your queries resolved. Again, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इज़ लाइक एन ओशियन, और मतलब आप कितना भी पढ़ लें आप पूरा नहीं कवर कर सकते, बट स्पेसिफिकली बहुत आपको पढ़ना होगा जी के, फॉर विच the GK faculty is a better person to guide you on that.
Any other queries, students, feel free to ask. Otherwise, we'll be calling it a day. Yes, Tyson, maths, aptitude, and drawing. That's a really good acronym you have given. That's really good. Anything else which anyone would like to ask, or shall we culminate this session here, students? Great then. I hope, I believe you must have learned a lot of things and you must have gotten a lot of information or inputs. So thank you so much. You have been a great audience. Take care, everyone.